Vishnupadram Rajakacha Kind Grace Kantas Adre Honorability Adre Raj Srimad Gaur Prem Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from Srimad Bhagavatam, text number 35 to 38. Text number 21, right? 21. Yeah, okay. So I'll read 35 to 37 by myself, and 38 has purport. We'll read and chant together. Athasram prashthe shukle kardamo bhagavan rishihi rishte sma mandushrashi tam kala pratipalayam. Translation. Then after the departure of the Lord, the worshipful sage Kardama stayed on the bank of Bindu Sarovara, awaiting the time of which the Lord had spoken. Manusyan danam asthaya satakum pravachdam dropya swam duhitaram sabharya prayan mahim. Translation. Swambhu Manu with his wife mounted his chariot, which was decorated with golden ornaments. Placing his daughter on it with them, he began traveling all over the earth. Purport. The Emperor Manu, as the great ruler of the world, could have engaged an agent to find a suitable husband for his daughter. But because he loved her just as father should, he himself left his state on a golden chariot with only his wife to find her a suitable husband. Tasmin sa dhanvan ahani bhagavan yad samadhishat upayad ashrama padam mune santa pratasyata. Translation. O Vidura, they reached the hermitage of the sage who had just completed his vow of austerity on the very day foretold by the Lord. Text 38 and 39. We'll chant together. Yasmin Bhagavato Netran Nyapatan Ashru Bindavaha Kripaya Samparishtasya Prapanne Arpitaya Risham Tadvai Bindusharo Nama Sharasvatsya Pariplutam Punyam Sivamrita Jalam Maharshi Guna Sevitam Yasmin Bhagavato Netran Nyapatan Ashubindavaha Kripaya
tasya prapanne arpitaya bhrisham tadvai bindushro nama sarasvatya paripulam punyam shivamrita jalam maharshi ganasevitam Yasmin Bhagavato Netra Patan Ashubinduvaha Vaya Samparistasya Prapanne Arpitaya Visham Advai Bindu Saro Nama Sarasvatya Pariplutam Punyam Shivamrita Jalam Maharshi Ganasevitam Yasmin Bhagavato Netra Nyapatan Ashubindavaha Kripaya Samparitasya Prapanne Arpitaya Visham वैसे तो इंग्लिश भी चलेगा हिंदी बोलने के साथ जयपुर में लेते हैं ना क्लास मिक्स करके चलो मैं मुझसे पूछो Yasmin, in which Bhagavataha of the Lord, Netra from the eye, Nyapatan fell down, Ashrubindavaha teardrops, Kripaya by compassion, Samparitasya who was overwhelmed, Prapanne on the surrendered soul, Kardama Arpitaya placed upon, Risham extremely, Tat that, why indeed, Bindusaraha lake of tears, Nama called, Sarasvatya by the river Saraswati, Pariplutam overflowed, Punyam holy, Shiva auspicious, Amrita nectar, Jalam water, Maharishi of great sages, Gana by hosts, Sevitam served. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. The holy lake Bindu Sarovara, flooded by the waters of river Saraswati, was resorted to by hosts of eminent sages. Its holy water was not only auspicious but was as sweet as nectar. It was called Bindu Sarovara because drops of tears had fallen there from the eyes of the Lord, who was overwhelmed by extreme compassion for the sage who had sought his protection. Translation with repetition. The holy lake Bindu Sarovara, flooded by the waters of river Saraswati, was resorted to by host of eminent sages. Its holy water was not only auspicious but as sweet as nectar. It was called Bindu Sarovara because drops of tears had fallen there from the eyes of the Lord, who was overwhelmed by extreme compassion for the sage
who had sought his protection. Purport. Kardama underwent austerities to gain the causeless mercy of the Lord, and when the Lord arrived there, he was so compassionate that in pleasure he shed tears, which became Bindu Sarovara. Bindu Sarovara, therefore, is worshipped by great sages and learned scholars because, according to the philosophy of the Absolute Truth, the Lord and the tears from his eyes are not different. Just as drops of perspiration which fell from the toe of the Lord became the sacred Ganges, so teardrops from the transcendental eyes of the Lord became Bindu Sarovara. Both are transcendental entities and are worshipped by great sages and scholars. The water of Bindu Sarovara is described here as Siva Amrita Jala. Siva means curing. Anyone who drinks the water of Bindu Sarovara is cured of all material diseases. Similarly, anyone who takes his bath in the Ganges also is relieved of all material diseases. These claims are accepted by great scholars and authorities and are still being acted upon even in this fallen age of Kali. Thus ends the Bhakti Vedanta Prabhu. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Karine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Here this expression from Muni, relevant austerity in the causeless are in receive. And when the Lord arrived there, he was so compassionate that in pleasure he हालांकि हमारे में कोई क्वालिफिकेशन है, हमारी साधना है, बहुत सारी कमी. Lord is very compassionate. This is the saving grace. भगवान जो है बहुत ही, अगर हमारी कमियां, बहुत सारे हम लोग आज बैठे, हमने चीज़ें की हैं, पाप किए हैं, not be qualified and have the good fortune भगवान के नाम का उच्चारण. Sheer compassion. लेकिन हम देखते हैं कि इतना मौका बावजूद, भगवान इतने चालू होने के बावजूद या लोग talking Bhakt, it is not only Bhakt is a general word.
हमारा प्रोसेस जो है बहुत ही ऑथेंटिक है, पावरफुल है। प्रभुपाद जी ने आया है इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद बोनाफाइड में आ रहे हैं। ऐसे क्या कमी है कि हमें लगता है एडवांस नहीं, आगे नहीं। और कई बार ऐसे होता है, कुछ आते हैं थोड़ा बहुत है, स्टार्ट करते हैं। On one side, the Lord is very, very compassionate, बहुत दयालु है, and He is showering causeless mercy. शास्त्रों में कहा गया है कि लव मात्र साधु संगा सर्व, हम भगवान के डिवोटी, लव मात्र propelled towards। प्रभुपाद जी से पूछा लव मात्रा, आज हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। भगवान के जो भक्त हैं, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, बहुत ही दयालु, बहुत ही कंपैशनेट है। तो उन्होंने हमें प्रोसेस दिया है, वो भी बहुत ही सरल है। वास्तविक में देखा जाए तो तुम कर तुम अव्यय, जॉयफुली परफॉर्म। तो ये स्टार्ट होता है, अच्छा में भी कहता है कि किस सिंगिंग एंड म्यूजिक गुड एनर्जाइजर द माइंड। हमारा डे स्टार्ट होता है म्यूजिक से। ग्रेट फॉर्चून। तो हमें एनालाइज करना चाहिए, अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग नहीं हैं या फिर अनुभव नहीं करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं या आना बंद कर देते हैं, क्या कारण हो सकता है। तो आज मैं आपसे, हालांकि कारण तो बहुत हैं, बहुत प्रकार के अपराध कर सकते हैं, लेकिन आज तीन चार कुछ ऐसे आपसे शेयर करूंगा विच आर पॉसिबल रीजंस, जिसके कारण प्रोसेस सरल होने के बावजूद, अच्छा होने के बावजूद, ऑथराइज होने के बावजूद, ऑथेंटिक होने के बावजूद, भगवान दयालु होने के बावजूद, हमारे आचार्य दयालु होने के बावजूद हम लोग इस मौके को खो बैठते हैं। क्यों? व्हाट वुड बी द रीजन? तो प्रभुपाद, एक भक्त ने डिवोटी प्रभुपाद से पूछा, कहा जाता है कि लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जस्ट लाइक द वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा, इट कैन कैच फायर इन एन इंस्टेंट, एंड प्रभुपाद बोलते हैं एंड इट मे नॉट कैच फायर इन 3 मिलियन लाइफ टाइम्स। अगर लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल सूखा हुआ है, इट विल इमीडिएटली कैच फायर। अगर वही लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी में भीगा हुआ है, पानी के अंदर है, उसमें कभी भी आग नहीं लगेगी। So the question is, what is the drying process? What will dry the wood? Ultimately, लकड़ी में आग लगनी, हमारे में भक्ति जागृत होनी है, शरणागति जो पूरा सरेंडर की भावना है वो उत्पन्न होनी है। तो कैसे हो? व्हाट इज द ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द वुड? अगर आग लगनी है, लकड़ी को सुखाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद से पूछा कि व्हाट इज द ड्राइंग प्रोसेस? इज इट डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड? जिसको भगवान की ज्यादा मर्सी मिलेगी वो जल्दी ड्राई होगा। सो प्रभुपाद कहते हैं लॉर्ड्स मर्सी इज अवेलेबल टू एवरीवन। लॉर्ड्स मर्सी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट
depends on the capacity of the receiver. प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे कि रेन इज फॉलिंग, वो ड्राई ग्राउंड में है तो तुरंत वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। वही रेन अगर रॉक पे फैलेगी तो कुछ पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग बहुत सिंफुल हैं, बहुत मटेरियल डिजायर्स हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं, ना केवल मेंटेन कर रहे हैं, उसको उसको बढ़ा रहे हैं आगे, उसको फैन कर रहे हैं, फैन मतलब उसको ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो हालांकि ये प्रोसेस है, हालांकि भगवान की मर्जी है, बहुत दयालु हैं भगवान, लेकिन हमारे में क्षमता नहीं होगी कि हम उसको एब्सॉर्ब कर सकें, उसको रिसीव कर सकें, वो रिपेल हो जाएगी मर्जी। जैसे कि पानी अगर पत्थर पे गिरे तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, फिसल के निकल जाएगा। सो process is very powerful, it's very authentic. Mercy is available. Radha Madhav has come, available for us to serve him. Man mana bhav mat bhakto, think of me, we can think of Radha Madhav, we can pay obeisances. Mam namaskuru. So that is one thing. If we have too much material desires, if we are too sinful, and we are not serious to give up our anarthas, serious about anartha nivriti, then we lose the opportunity. So here the Lord is so merciful in this material world, in this Kali Yuga, just like this Bindu Sarovara, Lord is also manifesting in the form of Ganges, water emanating from the toes. हालांकि हमारे में बहुत सारे सिंफुल डिज़ायर्स हैं, सिंफुल रिएक्शंस हैं बीजा के रूप में, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयामयी हैं कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं where a person can go take bath in Ganges and can get freed of those reactions. बट प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि अगर हमारे कुछ सिंफुल टेंडेंसी नहीं गई है, then कुंजरा सोचवत, वो एलिफेंट की तरह हम जाएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन फिर आके दोबारा अपने शरीर पे डाल लेंगे। So the first thing which keeps us away is our sinful tendencies, sinful desires, material desires. Even chanting of the holy name, one of the 10 offenses is to maintain material desires. Maintain. वो डिजायर नहीं है तो आई शुड गिव अप मटेरियल डिजायर, वो इच्छा नहीं है, मेंटेन करने की इच्छा है, बढ़ाने की इच्छा है। So that is one thing. Second thing is we can follow the process very ritualistically. बहुत लोग चैंटिंग करते हैं, you know, for what purpose? To finish chanting. किसी तरह आश्रय का एक लेवल लिया है, कुछ कमिटमेंट ले ली है, अब तो करनी पड़ेगी, किसी तरह कंप्लीट करो। कई बार हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं विदाउट कीपिंग इन फोकस द पर्पस बिहाइंड दिस प्रोसेसेस, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई आर वी चैंटिंग, व्हाई आर वी डूइंग deity worship, व्हाई आर वी डूइंग sadhana bhakti, why are we hearing Bhagavatam class, what is the purpose, why are we here in this movement.
very mechanically. We can be chanting mechanically. Prabhupada, this Madhu Prabhu explains auto chanting, auto doing, auto hearing. Just like tape recorder, you switch it on, it is going on. Likewise, chanting becomes a habit, auto doing. Mind कहीं और है, chanting हो रहा है. उसका भी फायदा है, लेकिन we will not get the complete mercy of Nama Prabhu, who is manifesting so mercifully in front of us on our tongue, giving us an opportunity to touch him and get purified. Once there was an army camp. हर सिटी में आर्मी के कुछ बटालियंस होते हैं, कुछ कैंप्स होते हैं. तो उस आर्मी कैंप में, खासकर इस पर्टिकुलर प्लेस में, जो मीटिंग हॉल था जहाँ पे सारी मीटिंग्स होती थी, वहाँ पे साइड में एक वुडन चेयर्स, बहुत ही अच्छी विद वेलवेट सीट्स, और वुडन चेयर के अगल बगल साइड में 2 सिपाही गनमैन गन लेके खड़े हुए, चेयर के दिस साइड, बोथ साइड्स. तो जब भी मीटिंग होती तो ये सिपाही अपना ड्यूटी करते, वो चेयर के आसपास में बैठे खड़े होके गन लेके. और ये मीटिंग हॉल में एक साइड पे थी ये चेयर, जो कॉन्फ्रेंस टेबल होती है, उसके अलावा चेयर, मीटिंग वहाँ होती थी. तो एक व्यक्ति को ये प्रश्न उठा उसके दिमाग में कि ये क्यों ये चेयर को ऐसे ये सिपाही खड़े होके इसका देख रेख करते हैं, ये क्यों, किसने स्टार्ट किया है, क्या रीज़न क्या है, इसका पर्पस क्या है. तो उन्होंने जो अपने कैंप के जो हेड हैं उनसे जाके ये प्रश्न किया कि ये ऐसा क्यों है कि 2 सिपाही जो है हमेशा इस चेयर के आसपास खड़े रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इसका रीज़न क्या है. तो बोला ये प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी था, मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली चलता आ रहा ही है. मेरे से पहले जो हेड थे, जब मैंने डिवीज़न ज्वाइन किया अब ये प्रथा थी, तो अभी कंटिन्यू हो रही है, मुझे भी नहीं पता. तो बोलते अगर आपको जानकारी करनी है, इफ़ यू आर रियली क्यूरियस, अगर आपको पता लगाना है तो मेरे जो सुपीरियर थे, जो मेरे से पहले थे इस कैंप में, आप उनसे पूछिए, उनको पता होगा शायद. तो अब क्योंकि लालसा बहुत थी, क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कैसे पता लगे, तो उनके पास गए और यही प्रश्न किया कि जो हमारे मीटिंग रूम में जो चेयर है, क्यों है ये 2 सिपाही उसके सामने खड़े रहते हैं हमेशा, क्या है इस चेयर में कि इनको सिपाहियों को वहाँ खड़ा रहना चाहिए. तो वो बोलता मुझे भी नहीं पता, अगर आपको वास्तव में इसका आंसर चाहिए तो पहले से चलता आ रहा है. जो डिवीजन के फर्स्ट हेड थे उनको तो श्योर पता होगा, बिकॉज ये डिवीजन जब स्टार्ट हुई थी वो हेड थे, अब तो वो काफ़ी रिटायर हो गए हैं, काफ़ी ओल्ड हो गए. अगर आप उनको किसी तरह ट्रेस कर सकें, लोकेट कर सकें और उनसे पूछें, शायद आपको वो जवाब देंगे, विल बी एबल टू आंसर. सो फाइनली दिस पर्सन ट्रेस्ड उस डिवीजन का ओरिजिनल फर्स्ट हेड और उनके पास जाके पूछा कि सर ये मीटिंग रूम में आपके सामने ये सब कुछ बना था, ये मीटिंग रूम था, ये बोर्ड रूम, सब कुछ आपके सामने बना, आप पहले हेड थे, आप बता सकते हैं कि चेयर जो है मीटिंग रूम में उसके आसपास में सिपाही खड़े हुए हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं. सो ही सेड, क्या वो सिपाही अभी भी खड़े हुए हैं. मैंने तो उन्हें बोला था कि चेयर का जब पेंटिंग हुआ था फ्रेश, थोड़ा देख लेना आसपास खड़े होके, कोई उसको टच ना करे जब तक पेंट सूख ना जाए. अभी तक पेंट सूखा नहीं है क्या. तो इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग सभी कर रहे हैं,
हर चीज़ का, जैसे मैं कुछ आज के दुनिया में अगर आप बहुत बच्चों को पूछेंगे कि हम लोग दिवाली किस लिए मनाते हैं, तो बहुतों से, मैंने 2-3 बच्चों से भी पूछा है, तो जवाब मिलेगा पटाखे फोड़ने के लिए मनाते हैं। पर्पस ऑफ दिवाली इज टू बर्स्ट क्रैकर्स। हर चीज के पीछे एक पर्पस है, क्यों कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। और तभी हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान भी, भक्ति वेदांता ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम तुलसी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर गंगा में हम जाके स्नान ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस उसकी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, तभी नामामृता क्यों बोलते हैं हम लोग पढ़ें, सोलफुल जपा इतना क्यों हम लोग अध्ययन करें, प्री जपा वर्क करें, क्यों? वी विल नो द कॉन्टेक्स्ट, क्यों कर रहे हैं हम लोग जो कर रहे हैं। व्हाट इज द होली नेम, व्हाट इज नाम ऑफ प्रभु, हाउ मर्सीफुल ही हैज डिसेंडेड, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग। अगर हमारे पास ये पर्पस नहीं है, समझ नहीं है, तो हम लोग बहुत मैकेनिकली करेंगे, रिचुअलिस्टिक करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि इवन डीटी वर्शिप, अगर प्रॉपर श्रवणम नहीं है, तो डीटी वर्शिप विल बिकम गलग्रहा, बिकम अ बर्डन इन द नेक। हमारे गुरु महाराज प्राण प्रतिष्ठा करके डीटीस अब हमारे हाथ सौंप गए हैं, अब डेली इनकी पूजा करें, इट विल बिकम अ बर्डन। और हम लोग देख रहे हैं वास्तविक में बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जहाँ ठीक प्रकार से सेवा नहीं हो रही, पुजारी हैं वो किसी तरह कर रहे हैं धक्का लगा के। So second thing is we have to be always very cautious, हम सभी लोग, कि हम लोग जो भी चीज़ हमें बताई गई है प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन, बहुत मैकेनिकली, बहुत रिचुअलिस्टिकली नहीं फॉलो करें। और उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा हमारे को नित्यम भागवत सेवया का एक प्रोग्राम दिया है। उसमें ऑटोमेटिकली जब हम लोग सुनते हैं तो कॉन्टेक्स्ट, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो भी अभद्र है, जो भी रॉन्ग परसेप्शंस हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सब नाश हो जाती हैं जब हम लोग भागवत का श्रवण नित्यम, प्रभुपाद की किताबें डेली पढ़ते हैं। What could be the third reason? We are analyzing the reasons why the Lord being so compassionate, process being so easy, why at times we lose taste. What could be the third reason? Huh? Familiarity breeds contempt. कोई चीज़ ही बहुत आसानी से मिल जाए ना, तो हम लोग उसकी वैल्यू खो देते हैं। शास्त्र में कहा गया, बृहस्पति जब वो he went to the assembly of devatas, the demigods, King Indra and all the devatas, they did not respect him properly because every day is coming. Bृहस्पति is coming every day. So they did not feel the necessity of paying obeisances to him, giving proper due respect. So Brahaspati was very offended and he left the assembly. And subsequent to that, these devatas were attacked by the demons and they were defeated. Devatas went to Brahmaji and Brahmaji said, how could you, who are so powerful, who have defeated demons so often, be defeated by the demons? And then Brahmaji told the Devatas that you have lost your power because of disrespect to Brahaspati. So when we disrespect the superiors,
we lose power. We lose our pious credits. Or when we offend the Vaishnavas, Vaishnava aparadh, which is also called mad elephant offense. On one side, we are trying to dry the wood, other side, putting water. On one side, we are trying to grow the garden, other side, a mad elephant enters and ransacks the entire garden. So, while we are cultivating bhakti, devotional service, we have to be very, very careful of offenses, which also gets accelerated when we become too familiar with the devotees, especially seniors, superiors. Familiarity breeds contempt. Even Prabhupada's time, many devotees who were very close to Prabhupada, many of them even left the movement. Now, if somebody may ask, how come Prabhupada was such a pure devotee? Just by hearing him, so many devotees, their bhakti got ignited. But here they were serving such a pure devotee. Again, because of familiarity. That's why Prabhupada said, when you go to Vrindavan, if you're going, don't stay for more than 3 days. Because familiarity breeds contempt. अगर शास्त्र चक्षु नहीं है तो हम लोग अपने कंडीशनिंग के द्वारा वही चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे भी गंदगी है, यहाँ पे भी सुअर है, यहाँ पे भी गटर है, कैसे है धाम। ये सब बातों में फिलॉसफी बोली गई है, एक्चुअली रियलिटी तो कुछ और है। हमारा माइंड ऐसे ख्याल देगा। एंड इफ यू आर नॉट कॉशियस देन विल कमिट ऑफेंसेस। Again, all these are interconnected. Familiarity breeds contempt. Because of familiarity, जो भी धाम में रह रहे हैं या देख रहे हैं, वो रिचुअलिस्टिकली रह रहे हैं। उसका जो पर्पस है, उसका जो जो सिग्निफिकेंस है, जो की महानता है, वो सब भूल जाएंगे। या विल नॉट बी कॉशियस कि मैं धाम में हूँ। धाम में even what we do has multiplied effects, and offenses also has equally significant. It does damage to our bhakti lata if we commit offenses in dham. What else? What are the other related to familiarity breeds contempt? Also is sadhu ninda, criticizing the Vaishnavas. I think I have shared this earlier also. I have seen many devotees joining, many folk boys coming to the temple, many congregation coming, and I've also seen many leaving, छोड़ के चले गए. And over the years थोड़ा बहुत मैंने भी एनालिस किया है कि ऐसा क्यों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे साधु संग है, भगवान के दर्शन की अपॉर्चुनिटी है, मंदिर में रह रहे हैं, प्रसादम की व्यवस्था है, हर फैसिलिटी है, ऐसा क्यों? Is it के somebody is not able to do the sadhana? Is it because कि किसी की chanting बहुत खराब है, he is not chanting properly? Is it because health के कारण कुछ important अंग जो हैं साधना के वो मिस हो रहे हैं? Actually, it is none of these. और वो इसीलिए क्योंकि भगवान जो है बहुत कंपैशनेट है, बहुत दयालु है। It is said that when we blaspheme the Lord is so compassionate that He doesn't even get affected if we offend the Lord or blaspheme the Lord. But He does not tolerate. What does He not tolerate? When we offend the Vaishnavas, His devotees. So I have seen over the years many times if devotees are not careful, for whatever reason,
familiarity breeds contempt, or in the organization when we are working, the mind is on what is not okay, and criticize the systems, criticize the temple, criticize the management, criticize the devotees, and it's like a mad elephant offense. Whatever credits we have accumulated, Prabhupada says it will not be destroyed because bhakti is eternal, all the credits are eternal, but for the time being, advancement will be checked. So, as devotees, we should always have that attitude of gratitude, feel grateful. Even if something wrong is happening, we should see Lord is in control. Whatever we can do in our जो दायरा है हमारा, जो भी हमारा इन्फ्लुएंस है, उसमें हम करें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी. मान लीजिए हम देखते हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ गलत हो रहा है, ट्राई आवर बेस्ट, करेक्ट इट whatever is possible, and then give it to the Lord. We should cultivate an attitude where we are seeing good in devotees, good in so-called reversals in our lives, so-called bad times. Everyone will go through good times, bad times. You should cultivate. It doesn't happen automatic. Conditioned soul means he'll criticize. Conditioned soul means he will think, why it's happening to me? Conditioned soul means think, why Lord is doing this to me? But cultivate an attitude that the Lord is so kind, the Lord is so merciful. It is His mercy. Chitraketu was cursed by Mother Parvati. But it is my doing. I deserve it. And these are all not philosophy. These are all things. If we have to be steadfast in our devotional life, all these principles have to be followed. Day in and day out, we'll get a test. Reversals will happen. Negative things will happen. That's when we have to apply the principles. There was once a minister who was very God conscious, and in all situations, whatever would be happening in his life, he would say, Lord is very kind. सब अच्छे के लिए हो रहा है. जो कुछ भगवान कर रहे हैं अच्छा के लिए कर रहे हैं. And the king was not a staunch believer, more or less like an atheist. He used to get irritated. जब भी कुछ हो, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा, भगवान अच्छा कर रहे हैं, भला होगा सब. And the king would, every time he would say this, he'll get irritated, he'll get angry. So one time, the king, in his palace, he was cutting something, some fruit or something, he was cutting, and his finger got cut. So the king was a lot of pain. And again, when reversals come, so an automatic question comes, why it happened to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? So the same question came in the mind of the king. मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तो सबका भला करता हूँ. So this minister came. Says, क्या हुआ आपको? मतलब दिखता नहीं कि मेरी उंगली कट गई. भगवान के कुछ हायर प्लान है, सब कुछ अच्छे के लिए होता. जब ये सुना तो किंग बिकेम, ही कुडंट कंट्रोल हिज एंगर. इसे क्या अच्छे के लिए होता है? मेरी उंगली कट गया, बोला अच्छे के लिए हो सकता है, इसमें भी कुछ भलाई है मेरी. एंड ही गॉट सो एंग्री एंड ही सेज,
इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, इसको डालो थाने में, कैरी करो इसको। दे इम्प्रिजन हिम एंड दैट पर्सन अगेन इज सेइंग सब कुछ अच्छे के लिए होता है, भगवान अच्छा ही करते हैं सबको। Few days later, the king had gone for hunting in the forest. So there he lost his way on his return. रास्ते भटक गए और कुछ ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट में होते हैं उन्होंने किंग को कैप्चर किया और लेके गए अपने साथ। वहाँ पे उस दिन वो लोग एक सैक्रिफाइस कर रहे थे और उस सैक्रिफाइस में वो चाहते थे कि वो नर बलि करें। नर बलि मतलब एक आदमी की बलि चढ़ाए। जनरली सैक्रिफाइसेस में कोई जानवर की बलि चढ़ती है। उस सैक्रिफाइस में उस दिन वो एक ऐसे आदमी की तलाश में थे कि जिसकी बलि चढ़ाई जाए, और उनको ये राजा मिल गया तो बहुत खुश। ना केवल एक नर बट एक राजा। तो जो उनका जो हेड था, ट्राइबल का हेड था, वो बहुत खुश था। आज तो हमारी जो देवी है बहुत ही खुश होगी, नरबली के लिए हम लोग एक राजा को लेके आए हैं। तो जब राजा को मारने लगे तो तुरंत बोला नहीं नहीं रोको 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 रोको, इसकी बलि नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोलता है ही इज नॉट कंप्लीट, इनकी बॉडी कंप्लीट नहीं है, इनकी जो उंगली कटी हुई है तो इसको इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो बोला इसको छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है। तो राजा को छोड़ दिया गया। तो जब वापस आ रहा था तो उसको याद आया। क्या याद आया? मिनिस्टर ने बोला था सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी तो हो गया होता, बलि हो गई होती आज। तो वापस जाता है, जाके पहला काम क्या करता है? उसको क्या काम करता है पहले जाके? उसको बोलता है वो मिनिस्टर को बाहर निकालो। जो बोला था उसने सच ही बोला था, सब कुछ जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो बोला कि मैंने आपको गुस्से में आके कैद करवा दिया, ये भी अच्छे के लिए वो था, इसमें भी भलाई थी आपकी। इसे हाँ, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, मेरी भलाई थी इसमें। कैसे भलाई थी आपकी? बोलता अगर आपने मुझे कैद नहीं किया होता मैं आपके साथ शिकार में जाता, और वो देखते कि आप कंप्लीट नहीं है, आपकी उंगली नहीं है, मेरे को बलि चढ़ा रहे थे। तो मुझे कैद खाने में बंद करके आप गए, आप भी बच गए, मैं भी बच गया। एक्चुअली इट इज अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। हमें वो दृष्टि चाहिए देखने की। The Lord is very kind, the Lord is very compassionate. If we have the right vision, then first and foremost, reversals will not come. Everything will be seen as blessings in disguise. और even if the reversals come, अगर हमारा ये attitude है कि हम लोग उसमें भी भलाई देख रहे हैं, भगवान का कुछ हायर प्लान होगा, इट इज माई डूइंग, मैंने कितने पाप किए हैं, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मुझे तो और भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे तो और भी दुख भोगने चाहिए, लेकिन भगवान की इतनी असीम कृपा है कि आई एम जस्ट गेटिंग अ टोकन रिएक्शन। और जब हम लोग रिबेल करते हैं, मानने को तैयार नहीं है, चीज में अच्छा नहीं देख रहे, एंड देन वी रिबेल, ऐसा क्यों, आपने क्यों ऐसा किया, ऐसे क्यों बोला? Familiarity breeds contempt, and fault finding, then criticism, everything upstarts. All that one by one follows, and the person starts getting into a positive spiral, negative spiral का पोस्टर है ना, one starts getting into negative spiral. Negative spiral मतलब क्योंकि वो निंदा कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, फेमिलियर हो गया है, तो प्रोसेस भी रिचुअलिस्टिक करेगा, उसमें टेस्ट नहीं है।
चैंटिंग कर रहा है लेकिन टेस्ट खत्म हो गया। अब टेस्ट नहीं है तो फिर मटेरियल डिजायर्स पनपेंगे, क्योंकि मटेरियल डिजायर से वहां पे आनंद आता है। यहाँ आनंद नहीं मिल रहा तो कहीं और तो आनंद मिलेगा ना। तो इंटरनेट में ये देखना, वो देखना, मूवीज देखना, वहां पे आनंद की खोज होगी। एंड वन स्टार्ट्स गेटिंग इनटू नेगेटिव स्पाइरल। So we all have to be very very cautious. We are very fortunate, हम लोग को ये सौभाग्य मिला है भगवान की सेवा करने का, भक्तों के संग में रहने का। And this is a wonderful temple. कल मैं went around, so many people coming, so nice management, so nice devotees. So let us not miss this. They are with their own just give them and it goes back to their normal life. So they anti-preach. He preached. So उनका आज सो हमारा ये हमारा ड्यूटी है, जो भी हम लोग प्रचार करते हैं, जो भक्त लोग हमारे टच में, उनको कैसे ओरिएंट करें, कैसे गाइड करें। हम भी चाहते हैं कि वो प्रचार करें, लेकिन थोड़ा ट्रेनिंग दें उनको, ताकि वो फैनेटिकल ना बने। फैनेटिकल मतलब शुरू में हम लोग को भी, अगर आप देखें, हम लोग भी जब कृष्ण कार्य में थोड़ा बहुत फैनेटिकली हम लोग बिहेव किए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। एंड इट इज़ आवर ड्यूटी, जो हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग के साथ साथ थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कैसे वो अपने बंधुओं के साथ उनको डील करना है, कैसे उनको प्रचार करना है, अगर वो प्रचार करना भी है। सबसे पहले अगर आप फ्लाइट में भी जाएं तो अनाउंसमेंट हुआ है कि जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन तो निकाब अपने आप ऊपर से गिरेंगे, और दूसरों की सहायता करने से पहले खुद का नकाब पहले पहन लें। तो जनरली जब शुरुआत में ऐसा होता है, खुद की सहायता बाद में करेंगे, पहले दूसरों को बचाएं। Even sometimes devotees when they preach, I want this, I want to preach here, I want to preach there. So preaching also is of two types. What is two types of preaching? Book distribution is one type of preaching, and Harinam is one type of preaching. Two type of preaching is, one is preaching to others, and the most important preaching is preaching to our mind. Preach ourselves. Walk the talk. And if we have done lot of internal work, preaching to ourselves, then preaching to others will be automatically successful. You don't have to be an eloquent speaker, just have to be pure and sincere. Just by your presence, people will get impacted. Don't even have to speak words. And as you know, there are many professional reciters. क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरा हिला देते हैं लोगों को, लेकिन हार्ट ऑफ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत सुन के मज़ा आया, वो मज़ा के लिए जाते हैं, मज़ा होके आ जाते हैं, चेंज नहीं होता। सो वी डोंट वांट टू बी लाइक दैम।
प्रभुपाद क्रिटिसाइज करते हैं प्रोफेशनल स्पीकर्स. We don't want to be like professional speakers, professional preachers. Purity is the force. और प्योरिटी के लिए बहुत ही काम है. We have to do lot of work. उसको फोकस में रखना, चीज़ों से फेमिलियर नहीं हो जाना. किस प्रकार हम हर चीज़ में भगवान का हाथ देखें, उनकी मर्जी देखें, अनुकंपा देखें. इट्स हार्ड वर्क, इट डजंट हैपन ऑटोमेटिकली. वो कल्टीवेट करना पड़ता है, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है. So critical thinking and criticism, whatever criticism or critical thinking, first it should start for ourselves. The problem is हमें अपनी दोषों का एहसास नहीं होता, दूसरों के दोषों का एहसास ज़्यादा होता है. दूसरों की बुराइयों का एहसास ज़्यादा होता है. जितना हम लोग उत्सुकता से क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उतनी उत्सुकता से या डबल उत्सुकता से we should look within and amend yourself before looking into the faults of others. किसने बोला था ये? भक्ति सिद्धांत से. Look within, amend yourself before you start looking into the faults of others. So critical thinking, criticism, everything has a place. लेकिन हम इतना उसमें उलझ ना जाएं कि we forget that we also should be equally critical of our own shortcomings, own weaknesses. अगर मैं किसी चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा तो I should be critical that yes, I have less patience, I have less tolerance, I should work on it. Otherwise we play the blame game. उसके कारण मैं ऐसा हूँ. Because of him today I am in problem. There's another saying, no one can hurt you without your consent. No one can hurt you without your consent. These are all important principles. हालांकि we all may be material quotes, but then many devotees can ruin their spiritual life because of violating this principle. Okay, we'll stop. One last question. मेरा ये जयपुर में सब डिवोटीज जानते हैं, मेरा एक फेमस स्टेटमेंट है, शायद आपको भी पता लग गया होगा. अवॉइड टू एक्सट्रीम्स. तो अगर हम लोग को फॉल्ट दिख रहा है, एक एक्सट्रीम है कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं गलती उसमें, सब कुछ ठीक है, दैट इज वन एक्सट्रीम. द अदर एक्सट्रीम इज उसमें फॉल्ट है, जब तक उसका फॉल्ट ठीक नहीं होगा मुझे शांति नहीं आएगी. और ना केवल उसका, सारे फॉल्ट जो है ना आसपास सब ठीक होने, तब मैं शांति पीसफुली से चैंटिंग करूँगा. और उस दिन का वेट करते हैं जब तक वो सुधर जाए, सारे सुधर जाएं, सारा वातावरण सुधर जाए, तब मैं शांति से भक्ति करूँगा. दैट इज अदर एक्सट्रीम. विजिबल फॉल्ट दिखते हैं, अपना ड्यूटी करो. अगर आपके जूनियर है तो उसको एक सही स्वभाव के साथ, सही उसके साथ बोलो, दिस इज योर मिस्टेक, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. नहीं तो अगर आपके सीनियर हैं, ऐसा ड्यूटी जो आपके अथॉरिटीज़ हैं उनको जाके बोलो. नहीं मैंने तो 2 बार बोले और सुनते ही नहीं मेरी,
अभी तक वो भी ऐसे ही बेकार है और मुझे परेशान कर रहा है। That's why Krishna in the Gita says, you do your duty, don't be attached to. अगर ज़्यादा ही आपको पेन कर रहा है 2 बार बोलो, और पेन कर रहा है 3री बार बोलो, और उसके बाद टॉलरेट करो, बिकॉज वी कैनॉट चेंज एवरीथिंग. ओ लॉर्ड, गिव मी स्ट्रेंथ टू टॉलरेट थिंग्स विच आई कैनॉट change things which I can change, and the most important is give me intelligence to discriminate what I should change, what I should tolerate. वहाँ पे हम लोग गलती करते हैं. जिसको टॉलरेट करना उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं उसको टॉलरेट कर लेते हैं इन द नेम ऑफ ह्यूमिलिटी. ये सरल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना है. जिसको स्विमिंग नहीं आती उसके लिए स्विमिंग करना सरल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो स्विमिंग आएगी. तो व्हेन वी लिव इन अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, अभी क्रिकेटर्स अगर प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं. वो एक बॉलर को लेके आते हैं, बॉल करता है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे को ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी. और हम लोग नित्यम भागवत सेवा कर रहे हैं. चित्रकेतु ने कैसे किया, भरत महाराज ने कैसे किया, वो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अप्लाई करना है. फिर गलती करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर गलती करेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, फिर चलेंगे. द प्रोसेस. एंड ये प्रिंसिपल्स हम लोग इमीडिएटली नहीं समझ जाएंगे, बट द लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल. डायनामिकली द लॉर्ड विल रिवील. कुछ प्रभुपद का कोट सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ प्रवचन सुन लिया, कुछ क्लास में बोल दिया गया. लास्ट थिंग इज वी शुड बी फ्रस्ट्रेटेड. मैं बेचारा किस्मत का मारा, कहाँ फंस गया मैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट. मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे वो लिस्ट आती ना, फॉर्चून 500, रिच फोर्ब्स 500, अगर जेन्युइनली जो फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली जो है ना सबसे, अगर उसमें एक लिस्ट बनाई जाए ना, सारे डिवोटीज का नाम ऊपर में होगा. मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, सब नीचे में, पता ही नहीं कहाँ पे उनका नाम. वी ऑल विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. क्या नहीं है हमारे पास, लेकिन गुड फॉर्चून का एहसास नहीं है. फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. begging sitting on the diamond throne. Yeah. Stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की. ठीक है.